हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्या सोलगामा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बधाई 2 के डायरेक्टर हर्षवर्धन एंड साथ ही मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त एंड बहुत ही कमाल के एक्टर राजकुमार राव। थैंक यू। सबसे पहले तो ये जो बधाइयाँ आ रही है गानों को लेकर, जो ट्रेलर को लेकर, प्लीज उसके बारे में बताइए, कैसे रहे रिएक्शंस एंड फीडबैक्स? बहुत अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स हर कोई ये चाहता है कि उनके ट्रेलर को अच्छा रिस्पांस मिले, उनके गानों को अच्छा रिस्पांस मिले। और हम लोग वेट कर रहे थे एक्चुअली, क्योंकि फिल्म रेडी थी कुछ टाइम से। हम लोग वेट करते थे कि जल्दी से पता नहीं रिलीज डेट अनाउंस हो तो थिएटर में लोग जाएं, और हम चाहते हैं कि लोग देखें हमने क्या बनाया है। एंड व्हेन द ट्रेलर केम आउट एंड द काइंड ऑफ रिस्पांस वी सॉ, इट वाज ओवरवेलमिंग ऑनेस्टली। मतलब हमें तो अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स सब किसी को अपनी फिल्म अच्छी लगती है, पर जिस तरह का रिस्पांस मिला तो हमें लगा प्लीज अच्छा है, पीपल आर आल्सो लाइकिंग इट। बट ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही कमाल का सब्जेक्ट है। वाई? इसलिए बिकॉज एक इंटरेस्टिंग थीम तो है ही, साथ ही रिलेवेंट भी है। बिकॉज काफ़ी लोग वो लेवेंडर मैरिज जो टर्म होता है उसमें बिलीव करते हैं, अपने फैमिली से, दोस्तों से छुपाने के लिए दे ट्राई टू डू दिस इंडियन सोसाइटी में। तो क्या यही रीज़न था आप लोगों के लिए टू डू दिस फिल्म, मतलब स्टार्ट दिस फिल्म? एक्चुअली ये फिल्म लिखी है अक्षत और सुमन ने, तो उन्होंने ये सोचा था कॉन्सेप्ट, और मुझे पता ही नहीं था ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है। आई डिडंट नो इट वाज कॉल्ड लैवेंडर मैरिज एंड ये सब। तो उन्होंने जब बताया तो मैंने फिर पढ़ा उसके बारे में और फिर जानने की कोशिश करी। एंड कहीं तो बहुत इट्स नॉट वन ऑफ द नाइस थिंग्स टू हैपन, सो इट वाज वेरी it's a little sad, that they need to go through this compromised setup or an arrangement. But जितना हमने फिर उसके अंदर घुसे और घुसते गए तो लगा कि हाँ ये काफ़ी वैलिड सी स्टोरी है जिसको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, एंड वी शुड कम आउट विद इट एंड टेल द स्टोरी बिकॉज इट्स प्रीटी यूनिक, वेरी सेंसिटिव एंड वेरी ब्यूटीफुल. सो Your reason? Well, the story, I think the story was so unique, so special, so beautifully written, and I loved my character in it and even Bhumi's character. बहुत कम मिलता है कि ऐसा किरदार आपको जो आपको बहुत हंसा रहा है, बहुत ह्यूमर है उसमें, पर इसकी एक बहुत लेयर्ड है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटीज से भरा हुआ है, अपने ऊपर ही इतना बैगेज लेके चल रहा है. So I think it was just everything was there, and then the end especially, I think the way it finally ends, those last 20 minutes were heart touching. लेकिन एक वक्त था जब हमारे यहाँ पे गे जो फिल्म्स में जो गे कैरेक्टर्स होते थे उसे या तो ह्यूमरस वे में या मजाक के अंदाज में या उसके बाद भी बहुत बुरी तरह से दिखाया जाता है. लेकिन डू यू अग्री टू द फैक्ट कि आज पीपल हैव इवॉल्व्ड, इवन द फिल्म मेकर्स हैव इवॉल्व्ड एंड आज एक सेंसिटिव सिनेमा बन रहा है? Absolutely. Yeah, exactly. And I think even those cinemas, I don't remember me personally ever having fun at that kind of humor. Or jokes or the portrayal. It was pretty stereotypical. Yeah. And whenever they have been portrayed with some sensitivity, and it's not like अभी हुआ है, like बहुत पहले से भी बन रही हैं, ऐसे नहीं है कि थोड़े ही से बने, but जो भी बने बहुत sensitively बने, that struck a chord with all of us. So, but at the same time हमारी फिल्म जो है बहुत funny भी है. It's also because we are also looking at very different facets of people also. It's not just about the queer identity, I mean उनकी life और भी कुछ है. They are grappling with so many other things also, out of which a lot of funny situations emerge, and it's a humorous way of telling this film, not at the expense of them being queer, but at them having their own idiosyncrasies and their character traits. बट आज अगर LGBTQ हमारे यहाँ लीगलाइज तो हो ही गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की जो फिल्में हम इंटरनेशनल वे में देखते हैं बहुत कम बनती है. यू वर पार्ट ऑफ अलीगढ़ विच फिल्म वॉज ब्रूटली चॉप्ड, एंड जब रिलीज हुई थी हमने जो फिल्म मामी फेस्टिवल में देखी थी कुछ अलग ही फिल्म थी विच गॉट अवार्ड्स, एंड देन व्हेन इट केम आउट वाज समथिंग डिफरेंट. और वही जैसा आपने कहा कि कहीं पे ह्यूमर वे में प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है आज, बट क्यों कांट इट बी जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड? No, which is what I'm trying to tell you, Divya, is that now when I look at a story of anyone, if I'm going to make a film on you, my way of telling it will be it's a separate language that I have, and I look at a lot of things with some kind of humor. That's the style, and that's the voice that we wanted to talk, not because it's LGBTQI. It could be any film. I'm just saying, when I look at a particular character, and when I say कि यार ये if he's a queer person,
एंड उसके लाइफ में इफ दैट इज नॉट द ओनली थिंग अबाउट हिज लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, राइट, हिज आइडेंटिटी, सेक्सुअल आइडेंटिटी. और दूसरी जगह पे ही इज अ गूफ बॉल. आई एम लाफिंग एट हिम बीइंग अ गूफ बॉल कि आईडी दिखाओ में कोई क्वियर होना या ना होना कोई जरूरी नहीं है. तो हमारी जो कहानी है वो बहुत और भी चीजों को फैसेट्स में लेके आ रहा है. एंड ये नहीं है कि एवरीथिंग इज अंडर द माइक्रोस्कोप एंड अंडरलाइंड कि यार ये क्वियर फिल्म है. ऐसा नहीं है. दैट्स व्हाई यू कैन इवन नॉर्मलाइज द कॉन्वर्सेशंस व्हेन यू गेट अवे फ्रॉम दैट टू. एंड दैट्स अगेन इंडिविजुअल पे. I like to tell a story like that, and I think Akshat and Suman also believed in telling a story like that, not to make it palatable. Right. It's just the way we want to tell our stories. The kind of Rishida used to make. Yeah. You know, he would say something. Rishida. And I've been a huge fan of. I mean, fan क्या यही है. इसी पे तो जिए हुए तो ऋषिदा, बासु चैटर्जी, सही परांस पे. तो उनकी जो styles है of making film has made such a deep, has left such a deep impact and an indelible impact, you know, on our minds, that this is something which is very natural. ये हमारा एक स्टाइल है बोलने का तरीका. Something like a homeopathy pill कि आपने दवा भी दे दी साथ में, लेकिन एक अच्छे टेस्ट के साथ उसे प्रेजेंट कर दिया. राज, आप एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं इसमें, पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहे हैं. दैट आल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ तलाश, जब इसमें भी आप उस तरह से एक छोटे से रोल में. लेकिन इस बार काफी टफ हुआ रहेगा आपके लिए, बिकॉज बॉडी बनाना था, यू हैड टू बी दैट टफ गाय, बट आल्सो साथ में एक सेंसिटिविटी भी लानी थी बिकॉज बीइंग अ गे कैरेक्टर. तो बैलेंस बहुत राइट वे में आपको करना पड़ा होगा कि कहीं पे कोई गलती से भी कोई चूक ना हो जाए, कि किसी को हर्ट ना हो जाए. एग्जैक्टली, एंड वी वर वेरी अवेयर ऑफ इट. आई थिंक हम लोग जिस तरह के इंसान है, मैं, हर्ष, अक्षर, द टीम, भूमि, हम लोग कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे जिससे किसी का दैट वी विल नेवर हर्ट समवन सेंटिमेंट्स. तो हम लोग वी वर वेरी अवेयर एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल कि हम लोग को ऐसा कुछ नहीं करना है कि जहाँ पे कुछ किसी को गलत लगे. एंड द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस फिल्म वाज सो दैट पीपल, द वॉइसलेस faces can have some voice and we can participate in making their voices reach out to more people. So the whole point was that, and as I said, the last 20 minutes, if you see, there's a lot of course, comedy, funny, humor, but it's very sensitive also in nature. And I hope, it can inspire few people out there and who are still afraid and because of societal pressure and family pressure, who are still in their shell. I hope it can touch someone's heart and can inspire a few people out there. पुलिस ऑफिसर की भूमिका कितना मजा आया? पुलिस ऑफिसर की भूमिका पति. जी हाँ, भूमिका पति. पुलिस ऑफिसर जो भूमिका पति है, हाँ, करेक्ट. नो, इट वाज फन. आई थिंक शार्दुल इज as he said, उसकी अपनी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं. There's so much baggage that he's carrying and he's dealing with so many personal issues, one being in his professional life. And he wanted me to be in a particular shape. He wanted me to build some muscles because there's a strong reason behind that. It's not only just for the heck of it. तो उसके पीछे एक रीज़न है कि वो क्यों ऐसा है. वो कुछ करना चाहता था, कुछ नहीं हो पाया, but he felt very passionately about it, so he continued. I had fun building that body and doing those workouts and eating whatever सूखा फूका I could eat, the vegetarian food. बेचारा, हम लोग खाते थे दबा के, और ये रात को हमारे सामने से एक ब्रोकोली एक फिर 36 बार नहीं 50 बार चू करेगा धीरे से. तो एक मैंने बीच में कहीं पे एक मीम देखा था, क्रिश्चियन बेल के 3-4 अपीयरेंसेस दिखाए थे, उसके बाद आपके बीच फोटोज डाले थे, तलाश में ये फोटो, उसके बाद में ट्रैप का फोटो, दिस दैट, एंड अगेन राब्ता का. तो नाउ दिस इज गोइंग टू ऐड इनटू दैट. ट्राइंग विद योर, I don't know, I hope. I like changing myself physically if a character asks for it. I think it's my responsibility towards my character. I'm not doing it to prove a point or anything. It's the basic, that's needed from me. Like a director wants me to look like in a particular way for this character, and it's my responsibility to make him happy and to command his wish. तो कई लोगों का ये मानना है कि शादी तो आपने जो की वो अगेन कोविड टाइम्स में थी, तो कहीं अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन के खुद ही पिक्चर लेके आ गए, बधाई दो तो पीपल कैन गिव यू बधाई. Absolutely not. Of course, he's somebody, producer out there. Yeah. So आपने ऋषिकेश मुखर्जी की बात की, तो अगेन इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं. ये एक वक्त था जब अमोल पालेकर सर, जब उन्होंने एक बहुत स्ट्राइट वे में बैलेंस किया था बिटवीन कमर्शियल सिनेमा एंड दिस थिंग. हिज मूवीज वेयर लाइक क्रिटिकली अक्लेम्ड आल्सो, बॉक्स ऑफिस पे चलते थे. Correct. उसके बाद बहुत ही कम लोग थे जो ये बैलेंस कर पा रहे थे. यू आर देयर इनटू दैट. आपकी फिल्में सुपर हिट भी हुई है,
और देन क्रिटिकल अक्लेम भी हुई है, तो कितना टफ होता है आपके लिए टू बैलेंस इनटू दिस थिंग, और क्या ये ऐड करता है आपकी नेक्स्ट फिल्म में कि मुझे अगेन बॉक्स ऑफिस पे भी ये करना है साथ में क्रिटिकल? I stopped thinking like that. You know, I don't want to think like that anymore. कि मुझे बैलेंस करना है, मुझे दो ये और एक ये. I'm gonna do what my heart tells me to do. I'm just going to listen to my heart and do things only which excites me as an actor, and not thinking about anything else. कि उसका बॉक्स ऑफिस पे क्या होगा, वो तो किसी को आइडिया नहीं है. So I think at least. तो आपने किताब ले लिया है, लोगों को ये तो. Well, I'm happy. I'm happy if people think like that, and if that is there, because I want that people should think that, you know, they can. Touch wood, I want that to continue, but for that I have to work really hard with every film. I can't take things for granted and feel like ये अभी तो हो गया है. नहीं. So you guys are reopening the cinema halls after 80. Yeah. इसके पहले आपने रूही में भी वही किया था, तो again ये कितना प्रेशर है आप लोगों पे? I think any time when a theatrical would release, there would always be slight a pressure. Yeah. And now it's slightly different pressure कि unique situations है. So I think we are all adapting. Pressure तो हमेशा से होता है. इसमें एक अलग unique pressure है. But I think we are hopeful, you know, because it's again, we can see from the response to the trailer and the songs that there is that, and because we are kind of riding the wave, I mean, it's kind of going down. So hopefully it's the right time and people are like really desperate जो बोल रहे हैं कि साउथ इंडियन सिनेमा ही चलेगा, एक पुष्पा चल गई तो अब वो लिख रहे हैं, स्पाइडरमैन के बाद सिर्फ हॉलीवुड ही चलेगा, हिंदी फिल्म्स नहीं चलेगी, ऐसे लोग भी ट्विटर पे लिख रहे हैं. It's just one point of view to run and then they'll say हाँ ये ऐसी चलेगी. So it's just a way of you know, kind of, it's always easier to formalize a little things, you know. Yeah. But genuinely speaking, people in India, so not just South India, in India love going to the theatre. Right? Yeah. So come what may, even if a Pushpa is doing well in India, it's a fantastic thing. What it means is people want to go to the theatres and watch films. Now, what entices them is up to us. I mean, we are making those kind of films. If it smells good, if it feels that this is fun and it's going to be worth the while, they'll come, I think. Wow. So we wish you all the best. Thank for you. This movie and the future ventures also. आपकी बहुत कमाल की फिल्म है और आप प्लीज और फिल्में बनाइए. हंटर के बाद बहुत लंबा गैप लीजिए. Thank you. फिल्में बनाइए. एक और बार ऑल द बेस्ट. Thanks a lot. Thanks a lot.